Hello everyone, welcome back to SSV Crack Exams. As promised to you before, I am back with part 10 of the 15 sample SRT situations that I have brought for you in this part as pertaining to the SRT series that we have started a while back. So in this part, हम लोग कुछ 15 sample SRT situations देखेंगे along with the responses, and we will also discuss what kind of qualities a psychologist can assess of you from the responses that you will write. Starting with the first situation is a stranger faints in front of him at a bus stop. तो वो क्या करेंगे? Of course, he will help the stranger. He offers immediate aid and arranges for medical help. Next is he sees an elderly person struggling to cross the road. He will also assist the person in crossing safely. He will help him, right? So ये उसका social responsibility और quick thinking आप दिखा सकते हो. Next, your friend is spreading false rumors about someone. He will advise him against it and encourages truthfulness. Okay. Next, he receives a fake news message on social media. He will verify the fact before sharing and discourages misinformation. Next, his train is late and an important interview awaits. So he will inform the interview panel, explore alternative travel option and remains composed. ठीक है? या आप यहाँ पर direct लिख सकते हैं that he will book a cab. Okay, he will you also inform the interview panel about the delay due to the late trains, and he will reach the interview destination on time. Okay. Next, a colleague takes credit for his work. तो वो क्या करेंगे? He will discuss with him privately, maintains professionalism and ensures rightful recognition. Okay, and the colleague will take the credit back. His family opposes his career choice. तो वो क्या करेंगे? He will respect their concern, explain his passion, convince them to acknowledge his career choice and gain their confidence. तो इससे आपका mental agility और team spirit जो है वो show करेगा. Also आपको एक चीज याद रखनी है, if you want to do something in life, then you have to pursue it, no matter what. Okay, and that is the thing that you have to show here, how you want to convince your family or others, okay, to accept your choice. ये आपको दिखाना ही है क्योंकि इससे आपका determination और never give up attitude show करेगा. Next is his junior is struggling with training. So of course as a senior he will help him. So he will guide him, offer tips and encourages improvement. Next, a foreigner is lost in his city. So he has to help the foreigner as well. So he offers assistance and guides him to the correct location. His laptop crashes before an important submission. तो वो क्या करेंगे? He will use alternate means to complete and submits on time. तो अगर लैपटॉप एक इंपॉर्टेंट सबमिशन से पहले क्रैश कर गया तो ये क्या कर सकते हैं आप? ऑफ कोर्स एक और ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स क्या लिख सकते हैं कि आप उनको फिक्स करवाने के लिए लेकर जाओगे. आप जो आपके ऑफिस में आप बताओ कि आप उनको इन्फॉर्म करोगे कि आपका लैपटॉप क्रैश कर गया है और आप थोड़ा सा एक्सटेंशन मांगोगे, टाइम मांगोगे टू गेट इट फिक्स्ड एंड टू सबमिट इट. तो आप फिक्स करवाओगे लैपटॉप अपना और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज सबमिट करना था वो आप इजिली सबमिट कर पाओगे. तो ये भी रिस्पॉन्स आप लिख सकते हो. नेक्स्ट सिचुएशन कैन बी, ही हियर्स अ गन शॉट नियर बाय. तो वो क्या करेंगे? ही विल टेक कवर, असेस द सिचुएशन एंड अलर्ट द अथॉरिटीज. अथॉरिटीज को अलर्ट करना जरूरी है. Next, a person is drowning in a river. तो of course he will call for help, use a flotation device and rescue the person. या वो खुद कूद जाएंगे, स्विम करके उस इंसान के पास जाएंगे और उसको फिर बचाते हुए शोर में लेके आएंगे. ये भी कर सकते हो. Next, a family friend asks for a job reference beyond her qualification. तो वो क्या करेंगे? He will encourage her to apply for suitable roles and guides her to improve her skill sets. A close friend is involved in illegal activities. So of course he will advise him to correct his ways and if necessary reports to authorities. तो अगर आप यहाँ पे authority को report नहीं करना चाहते तो he will advise, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं that he will advise his friend to correct his ways. Okay, stop all the illegal activities and surrender to the police, surrender to the authorities or inform the relevant authorities. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, ही फेल्स टू अचीव हिज गोल. तो वो क्या करेंगे? वो गिव अप नहीं करेंगे. ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ही विल इंप्रूव हिज ओन स्ट्रैटेजीज, ही विल ट्राई अगेन विद डिटर्मिनेशन एंड सक्सीड्स द नेक्स्ट टाइम. ओके, तो अगर आप ऐसे एसआरटी के सिचुएशंस को लिख रहे हो, ठीक है, रिस्पॉन्सेस लिख रहे हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप किसी और का रिस्पॉन्स कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं. नंबर 2, आपको इमेजिन करना है कि आप इस सिचुएशन में खुद हो, तो आप जो एक्चुअल में करोगे वही आपको यहाँ पे लिखना है.
ठीक है, तो ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड टू एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग 2025 through which you can also join our live classes and you can interact with our mentors to get your SSB preparation done in a much better way and in an effective way. Also, we have provided a lot of written exam related courses through our app. So download our app today and use the code warrior10 while enrolling to any course so that you can get 10% discount on it. That was it from my side. From the next part onwards, I'm going to start with a new series altogether, and this series will be very special. So you have to stay tuned with us to see what this special series will be about. Till then, stay tuned and always take care. And Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।